हेलो बच्चों। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखा था। जो हमने टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े उसमें पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देखा, फोटोसिंथेसिस को डीपली देखा, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सब चीज हमने एक लाइन बाय लाइन उसको समझने की कोशिश की। And I hope the things are very clear to you. If you are having any doubts, you can ask me in the comment section. Okay, now moving on to the next topic, that is heterotrophic nutrition. Heterotrophic means depending on other, means the organism is not able to prepare their food on their own. They depend on other, for they depend on the environmental different things on this earth to prepare the फूड। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में भी आप जानते हैं कि बहुत तरह का न्यूट्रिशन होता है, बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। वी कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट category like herbivores, carnivores, omnivores. You all know that herbivores depends basically on the green plants only, like deer and rabbit, and carnivores which totally depends on the meat, the animals. They are carnivores like lions and tigers, and omnivores, hum, us human beings, means they depend on both the plant products also and the animal product also. So we are going to study this heterotrophic nutrition in general। ये हम छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम तीन में डिवाइड करते हैं। दे आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। बट हम यहाँ पर इन जनरल उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो बच्चों, अभी हमने देखा कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which are doing heterotrophic nutrition means which require any plant product or animal product or other organisms for food, they are called heterotrophic organisms. And they cannot prepare their own food. Okay, so why they cannot prepare their own food? Because they can't do photosynthesis. They can't do photosynthesis. It means they don't have chlorophyll, so they cannot produce food from inorganic substances. What are inorganic substances? Carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So they don't have the chlorophyll, they can't use the inorganic product from the environment to convert them into organic substances. So they have to depend on others for what? For consuming organic matter. And from where they will get the organic matter? From the plants or from the other animals. So how they are, their body structure, means their feeding habit are different from each other, that we will discuss in another slide. So बच्चों, हमने अभी देखा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों करते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को क्लोरोफिल के मदद से ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो कि प्लांट्स करते हैं। तो वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। किस पे? दूसरे डिफरेंट प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, जिनके पास ऑलरेडी ऑर्गेनिक फूड है। ठीक है। और हम जब आगे चलते हैं आगे पढ़ने के लिए कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके का फीडिंग हैबिट, खाने का तरीका अलग अलग होता है, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। सो बच्चों, we used to see different types of animals with different body structure, right? So how they are different, how the organisms which are found in different environment, they are having different body features, or you can say having different mode of digestion.
So, first of all, we will talk about the different factors on which their body structure or the mode of digestion depends on. The first is availability of food. How the food is available. Suppose if I talk about deer, the herbivores, they depend basically on grass. The grass are stationary thing. They are not running. They just go and eat the food. But when we talk about the lion, they have to run behind the animals. They have to use different tactics to catch that animal. So like if the lion is running behind the deer or any herbivore animal, it has to run fast. Okay, so there are different adaptations in all those animals. If suppose I talk about the cow, then a cow has different arrangement of teeth. That molar teeth are very broad, and they have different digestive system. They have one special pouch inside their body to digest the extra cellulose which is present in the grass. When you talk about the lion, their canines are very well developed. They can run very fast in comparison to the herbivores. So means not all the herbivores, but suppose if I am comparing the cow and the lion, so their body structures are different according to the availability of food. Next is which type of food they are taking. Suppose if they are taking solid food, whether they are taking liquid food, where they are dependent on living organism, whether they are dependent on dead organism. So their uh, type of means food actually decide their body structure. Now the third thing is how they are getting the food. Like if you talk about the mushrooms or the fungi, if I am talking about, actually they break down the organisms the outside their body and then absorb it. But when we talk about ourselves, every process means the breaking down of food, the digestion, everything is taking place inside our body. So on this process means how they are getting their food. How they are getting their food means how they are whether they are breaking down the food outside the body, whether they are taking it in whole thing is taking in, and then they are breaking it down. How they are taking, how they are or they are just taking the whole prepared food from the other organism. On this basis, actually we divide the organism into different groups. So now coming to the first mode of nutrition, that is saprotrophic nutrition. You all know that saprotrophic nutrition is that type of nutrition which depends basically on dead and decaying organic matter. So you, the very common example, this is a monsoon season. During monsoon season or the rainy season, what you have seen on various woods which are decaying outside in the environment, the fungus, the mushroom grows over it. So mushroom is a fungi and fungi is a saprophyte. So what they do actually, when they grow on that dead and decaying matter, they secrete certain juices which help in the means digestion of, they break down those materials into digestive form, and that digestive juices has been taken up by those organism for their nutrition. तो बेसिकली ये करते क्या हैं, ये सड़ी गली ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर अपने के ऊपर ये पनपते हैं। ये वहां पे जाके जन्म मींस इनके स्पोर्स होते हैं जो वहां जाके सेटल डाउन होते हैं, और यहाँ वहां पर वो एक जूस सिक्रीट करते हैं जिसके चलते वो उस ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में मींस डाइजेस्टिव, नॉट छोटे टुकड़े कहेंगे उनको, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म को आसानी से अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फूड का ब्रेकडाउन अपने बॉडी के बाहर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, सो हियर द मींस द some digestion process is taking place outside the body in case of what saprotrophic nutrition. जब हम saprotrophic nutrition
न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन के कुछ पार्ट जो है, जो कुछ स्टेप्स जो हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। जैसे सैप्रोट्रॉप्स में एग्जाम्पल आते हैं ब्रेड माउल्ड, ईस्ट और मशरूम। बच्चों फिर सेकेंड टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब जो हम में पाए जाते हैं, द न्यूट्रिशन विच इज फाउंड इन आवरसेल्फ, ऑल द प्रोसेसेस। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस? इंजेशन मींस टेकिंग इन ऑफ फूड, डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन इनटू डिफरेंट मींस स्मॉल particles, means complex, breaking complex food into simpler one, that is digestion. When it is broken down into simpler form, then it is absorbed by the blood, that is absorption. And then one more step is there, that is assimilation, means the things which are absorbed by the blood, it is being used up by the body for different processes, that is assimilation. And whatever the rest of the waste material is there, it is being ejected out from the body, otherwise it will cause poison in the body, that is called egestion. तो अब ये सेकेंड टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम मनुष्यों में देखने में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, हम पूरे के पूरे खाने को बॉडी के अंदर ले लेते हैं, कोई भी डाइजेशन का कोई भी पार्ट बॉडी के बाहर नहीं होता। यहाँ क्या है, इंजेशन, पहला जो है इंजेशन, मतलब खाने को हमने शरीर के अंदर लिया, हमारे माउथ के अंदर, हम इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम छोटे छोटे इंजेक्शन किया, हमने खा लिया, उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन में इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को, बहुत जो जटिल चीजें होती हैं उसको बहुत सिंपल तरीकों में तोड़ दिया जाता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, एकदम साधारण फॉर्म में। और फिर उस साधारण फॉर्म को हमारे बॉडी के अंदर ब्लड उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पूरे बॉडी में ले जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में जाते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा कई सारे फंक्शंस में यूटिलाइज किए जाते हैं। सपोज इफ ग्रोथ हुआ, रिपेयर हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, सब जगह वो यूज अप होते हैं। यूज होने के बाद जब वो यूज होते हैं, उसके साथ में बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, जो वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो ये इजेशन, तो ये 5 स्टेप है एक्चुअली। ये पांचों स्टेप्स कहाँ पे होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑल द process takes place inside our body.